बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर की एक सीरीज़ हम कर रहे हैं। ये हेडिंग आप अपनी बुक में देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस हेडिंग में ज़्यादातर पीरियड्स के हवाले से डिस्कशन है कि पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होंगे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। तो ये सब बातें ज़रा सा हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ज़रा देखते हैं कि व्हाट इज़ अ पीरियड। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और उसके बाद अब आप लोग एक काम ये कर सकते हैं मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए कि आप एक टेबल बना लें, इस तरह से एक चार्ट बना लें अपनी रफ कॉपी में। ये रफ वर्क है और इस रफ वर्क को आप समझते हुए लिखते जाएंगे तो आपको इस टॉपिक का आंसर लिखना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको याद करना चाहेंगे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आप पहले इसको इस चार्ट के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा इसका आंसर। और इस टॉपिक को समझने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, जिसमें एक है मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल और उससे पहले एक और है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है और मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखा है तो फिर तो आपको ये टॉपिक आसान लगेगा। और अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले मेकिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल ज़रा समझ लीजिए ताकि आपको कंपोजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल का अच्छी तरह से आइडिया हो जाए। अब हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे। इसमें हम पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन सी पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं, उस पीरियड को मज़ीद क्या कहा जा सकता है, उसका वैलेंस शेल नेम क्या है और उसकी लास्ट कन्फिग्रेशंस क्या क्या हैं। तो ये बातें हम हर पीरियड के हवाले से इस कॉलम्स में फिल करेंगे। अब देखते हैं कुछ पीरियोडिक टेबल को दोबारा। इस पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो रेड नंबर्स हैं दीज आर पीरियड नंबर्स। सो देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हमारे पास 7 पीरियड्स हैं तो हम सबसे पहले क्या करें, इस चार्ट में 1 से लेकर 7 तक लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पीरियड नंबर्स हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब एक और कॉलम को हम फिल करने जा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ईच एंड एवरी पीरियड। इसको आइडेंटिफाई करेंगे अगेन बाय द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप देखिए, फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली two elements 1 and 2. these are two elements only in the first period. आगे देखें, कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। so first period contains two elements. second period contains 2 and these are 6 elements. so 2 plus 6 8 elements. second period contains 8 elements. अच्छा, काउंटिंग करने की अलग अलग ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियड में। डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होंगे एक पीरियड में। इसी तरह एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होंगे एक पीरियड में। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि फर्स्ट पीरियड इज हैविंग ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देयरफॉर फर्स्ट पीरियड इज हैविंग 2 एलिमेंट्स ओनली। सेकंड पीरियड इज हैविंग एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, सो 2 from S and 6 from P. So 2 plus 6 8 elements हो गए। थर्ड पीरियड इज हैविंग 2 from S and 6 from P. तो 2 plus 6 8 elements. तो फर्स्ट पीरियड 2, सेकंड पीरियड 8, थर्ड पीरियड 8 एंड फोर्थ पीरियड इज हैविंग एस ब्लॉक भी है, डी ब्लॉक भी है और पी ब्लॉक भी है। एस के 2, डी के 10 और पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये एलिमेंट्स, ये टोटल मिलकर 18 एलिमेंट्स हो गए। फोर्थ पीरियड में एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स और पी ब्लॉक में 6 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in fourth period will become 18. Similarly, fifth period also contains 2 plus 10 and plus 6, 18 elements. लेकिन sixth period contains S block element, F block elements, D block elements and P block elements. So 2 plus 10 plus 6 and plus 14, this becomes 32. The sixth period contains 32 elements and seventh period is incomplete, although it consists of 2 from S, 14 from F and some elements from D block elements. So
Seventh period is incomplete, while sixth period contains 32. Again, I am repeating, first period contains 2 elements, second period contains 8 elements, third period contains 8 elements, fourth period contains 18 elements, fifth period contains 18 elements, sixth period contains 32 elements, and seventh period is incomplete period. Now, what about our chart? Look at the chart now. After number of elements, we have to look at the valence shell. First shell is K shell, L shell, M shell, N shell, O shell, P shell. देख लीजिए, first shell is K shell, second shell is L shell, M shell, N shell, O shell, P shell, and Q shell. So these are the names of the valence shell. If we are talking about period number 1, its outermost shell is K shell. If we are talking about period number 2, these elements have their last shell as L shell. इसी तरह period number 3, these elements have their last shell as M shell, and so on. Next is we have to discuss another thing, that is number of elements in each period. If you look at this numbering, we can observe easily that 2 is the lowest number and 32 is the greatest number. So if we can say that first period is having the lowest number and the sixth period is having the greatest number, therefore first period is also called the shortest period and the sixth period is also called the longest period. Why the shortest, why the longest? It's very clear from the number of elements. First period is having only 2 elements, so it is the shortest period. Sixth period is having 32 elements, so it is the longest period. Now come to the second and third period. Second and third period contains 8 elements each, while fourth and fifth period contains 18 elements each. Second and third period both contains 8 elements each, therefore they are short periods. Fourth and fifth period contains 18 elements each, therefore these are long periods. What about these are two short periods, so this is called, second period is called first short period, third period is called second short period, fourth period is called first long period, and fifth period is called second long period. So it becomes very simple. Okay, according to the number of elements we can call them some other name, like first period is also called the shortest period, second period is also called first short period, third period is also called second short period. Next is electronic configuration. If we again look at the periodic table, first period is having last configuration as 1s1 and 1s2. Second period contains 2s1, 2s2, 2p1 to 2p6. So if we generalize it, we can say that in first period the elements contain their last configuration as 1s, while in second period the elements have their last configuration as 2s and 2p. Third period elements contain their last configuration as 3s and 3p. Fourth period elements contain their last configuration as 4s, 3d and 4p. Fifth period 5s, 4d and 5p. Sixth period contains 6s, 5d, 6p and 4f. Seventh period elements contain 7s, 5f and 6d. Now look at the chart again. First period is having only one s orbital as their last configuration. Second period is having 2s and 2p. Third period is having 3s and 3p. Fourth period is having 4s, 3d and 4p. Fifth period contains 5s, 4d and 5p. Sixth period is having f orbital also. So 6s, 4f, 5d, 6p. Seventh period contains 7s, 5f, 6d and 7p. Now look at the topic again, how we have to write it in exams. We had studied about the period numbers, about their number of elements, about their electronic configuration. Now we have to look how this will be done in the exams. So this is our heading once again. The definition of the modern periodic table, the tabular arrangement of elements on the basis of electronic configuration, is known as
long or extended form of periodic table or modern periodic table. Next is there are 7 periods in the modern periodic table. Period number of an element represents its outermost shell number. Each and every period we are going to discuss, like period number 1. What we are going to write in period number 1 heading? We have this discussion. Period number 1 is having 2 elements only. It is also called the shortest period. Its elements have their last shell as K shell and its elements have their last configuration as 1s. So this is all about, we know that about the first period, and this is all we have to write. Now look at the topic again. This is how we have to write. This period corresponds to the filling up of K shell. It contains 2 elements only. It is also called the shortest period. The orbitals filled in this period is 1s. You may take it as a form. You have to fill or change the only values for each and every period. For example, if we are talking about period number 2, you have to change the shell number. K shell के बजाय क्या हो जाएगा? L shell हो जाएगा. Number of elements in second period is 8 elements, so you have to write 8 here. And second period is also called first short period. You have to write here first short period. The orbitals filled in this period is 1s. We have to write in second period 2s and 2p. So this is very simple. If you memorize only period number 1, then you can put the values of all the periods in this. So this will become very easy. This is about second period. Second period contains 8 elements. It is also called first short period. Its last valence shell corresponds to L shell. Its last configuration is 2s and 2p. So this is all about period number 2. Once again, this is period number 3, M shell, 8 elements. It is also called second short period. Its last orbitals are 3s and 3p. This is about fourth period, N shell, 18 elements. It's also called first long period. Its orbitals are 4s, 3d and 4p. This is period number 5. Outermost shell is O shell and 18 elements. It is also called second long period. Last orbitals are 5s, 4d and 5p. This is sixth period, also known as P shell. It contains 32 elements. It is also called the longest period. Its last orbitals are 6s, 5d, 4f and 6p. This is the last period, seventh period. It is an incomplete period and its orbitals are 7s, 6d, 5f and 7p. Thank you very much. I hope you have easily learned this topic. Kindly write it on your own so that you must have a practice of this question. Thank you very much. Any question or comment is welcome.